All right, guys. Hello and welcome everyone to this call. Just let me know in the chat section अगर मेरी आवाज clear है. If my audio and video are absolutely clear, drop a quick yes in the chat section. Everyone on Zoom as well as on YouTube, अगर मेरी आवाज clearly आ रही है तो just drop a quick yes in the chat section. All right, perfect. Give me a second. एक बार check कर लेते हैं if everything is sorted. All right, perfect. Perfect. हाँ जी भाई, YouTube की जनता कैसे हैं सभी लोग? फटाफट से इस YouTube लाइव को लाइक कर दो इफ यू आर हेयर, बिकॉज आई लव वॉचिंग लाइक्स. जितने लोग एटलीस्ट देख रहे हो उतने लोग मेक श्योर कि यू आर लाइकिंग दिस लाइव स्ट्रीम सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस. एंड आज का टॉपिक क्या है? हाँ, आज का टॉपिक रहने वाले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. सो आई एम गोना शेयर द सेल्स प्रोसेस विद यू, जिसके बारे में लास्ट वीक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. वी स्टार्टेड अप विद द प्रोसेस. सो डिटेल में हमने डिस्कवरी कॉलिंग के बारे में बात किया था. उसके आगे सेल्स प्रोसेस के बारे में भी हमने ब्रीफली बात किया था. जो ऑलरेडी हमारे मेंटीज हैं हु आर अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स, उनके पास में एक्सेस था ट्रेनिंग्स का, तो उन लोगों ने चेकआउट किया. बट उसके बाद भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे सेपरेटली, लाइक बिकॉज anyone who watched that recording या जो लोग लाइव भी अटेंड कर रहे थे, they texted me on Instagram, they texted me at other places also, to my team also mailed us कि they want to get more information about the sales वाला part also. So today we are going to discuss briefly about sales also. We are not going to go too much in depth because it is not possible एक दो घंटे में sales की सारी चीजें जो हम वैसे सिखाते हैं डिस्कस करते हैं सिखा पाए, because sales is more about practice. So the initial thing is कि we can provide you with tools and resources like scripts and वगैरह वगैरह बाकी सारी चीजें provide करा देंगे. But to become perfect at sales and actually make money out of it, तो it is more about practice. The more you practice, automatically you become better. मतलब आपके पास में कोई स्क्रिप्ट ना हो, कुछ ना हो, बस आप अगले एक साल तक अपने सेल्स कॉल करते रहो एंड अपनी कॉल्स को खुद, सेल्स कॉल की रिकॉर्डिंग को खुद सुनते रहो, ऑडिट करते रहो, एंड यू वुड बी ऑटोमेटिकली 100 times बेटर इन द नेक्स्ट 1 year. सो दैट इज मोर अबाउट सेल्स. बट इस एक साल के प्रोसेस को कैसे एक महीने में किया जा सकता है, दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट अ मेंटोर हेल्प्स यू विद. एंड आज हम वैसे ही कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग, टेल मी इन द चार्ट सेक्शन, आप में से कौन कौन ऐसा है जो भी सेल्स कॉल लेता है? यू हैव डन एटलीस्ट अ सिंगल सेल्स कॉल. आपने अभी तक एक एटलीस्ट सेल्स कॉल करी है. क्लोज हुआ या नहीं हुआ दैट डजंट मैटर, लीड क्लोज हुई या नहीं, बट यू हैव एटलीस्ट अटेम्प्टेड अ सेल्स कॉल. नाउ व्हाट इज बेसिकली अ सेल्स कॉल? अ सेल्स कॉल इज बेसिकली अ कॉल विद योर लीड, जहां पर आपका मेन इंटेंशन होता है टू क्लोज देम, to get money out of their pocket. Have you done any call like that? Drop a quick me in the chat section if you are anyone who has done at least one sales call. Close हुई lead है या नहीं, आप sales कर पाए या नहीं कर पाए, that doesn't matter, but if you have even attempted one sales call. अरे everyone be active भाई. अगर chat section में या session में activeness नहीं दिख रही, there is no point of doing this session. Do you want me to kick out people who are not active in the chat section? Believe me, I can do that. Ah, don't make me. चलो ठीक है. ओके, मी ठीक है. नाउ एनीवन हु इज टाइपिंग मी इन द चैट सेक्शन, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू फील वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप वो डील क्लोज नहीं कर पाए, या फिर अगर क्लोज कर भी ली तो व्हाट वाज द बिगेस्ट हर्डल या बिगेस्ट चैलेंज दैट यू वर फेसिंग जब आप उस कॉल पर थे, या उस पूरे सेल्स के प्रोसेस में व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. सोच सकते हो, एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, इट्स फाइन. मतलब इट्स पॉसिबल कि एक से ज्यादा चीजें हो. आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. ओके. सेल्स क्लोजिंग टेक्निक, वैल्यू प्रोपोजिशन, ओके, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है. मतलब दैट इज मोर अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज ऑब्वियसली वन ऑफ लाइक कोर रीजन बिकॉज ऑफ इट सेल्स होती है या नहीं होती है. क्लोजिंग पिच, ठीक है. ओके. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि आप लोगों के एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड टू इंश्योर कि आज के सेशन में हम वो चीज़ों को कवर कर सकें सो दैट आप बाद में इन चीज़ों से बच सको एंड ये प्रॉब्लम्स आपके सामने दोबारा ना आए. सॉर्टेड? ओके. और क्या चीज़ें हैं? लैंग्वेज बैरियर आ रहा था. देखो यार, लैंग्वेज बैरियर इज समथिंग, मतलब दैट इज नॉट अबाउट सेल्स. अगर आप, आई प्रोबेबली अज्यूम कि आप हिंदी में बात कर रहे हो तो आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. द लीड माइट बी
इन एनी लैंग्वेज, मतलब दे माइट बी कंफर्टेबल इन एनी लैंग्वेज लाइक तेलुगु, तमिल, ऐसा कुछ भी है, दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट। मतलब यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आई कैन नॉट टेल यू टू लर्न तेलुगु टू टॉक टू दोज पीपल, इट वोंट मेक सेंस। एक दो लीड ऐसे आते हैं तो इग्नोर देम, आस्क योर एड्स मैनेजर टू चेंज टारगेटिंग और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आपके पास में हिंदी स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग लीड्स आए जिन लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। ट्रस्ट इश्यूज, major reason, like because of which sales happen. But as per me, trust is the biggest reason, biggest factor जिसके ऊपर sales dependent होती है। मतलब if you can trust me, you will buy from me, and if you cannot trust me, no matter how good the product is, you won't buy from me. As simple as that. All right, all right. ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर if we are good to go, तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर दैट एक सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन and get the thing sorted. Mhm. All right. मेरी आवाज क्लियर? आई फील दिस सम नेटवर्क ग्लिच ऐसा कुछ हुआ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? परफेक्ट। स्क्रीन विजिबल है? सॉर्टेड। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं 7 स्टेप सेल्स प्रोसेस, फिर उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फ्रेमवर्क्स। इसमें से कुछ फ्रेमवर्क्स आप लोगों को पहले से पता हो सकते हैं इफ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स, एंड कुछ चीजें और भी नई हो सकती हैं इन सम फॉर्म ऑफ रिवीजन, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप प्रैक्टिस करते थे। आई हैव नॉट मी एक्चुअली, बट आई हैव फाउंड अ फ्रेमवर्क जहां पर हमने अपनी लर्निंग्स को फ्रेमवर्क के फॉर्म में कन्वर्ट किया। वाई? बिकॉज फ्रेमवर्क्स के थ्रू चीजें समझना आसान होता है, लर्न करना आसान होता है, अप्लाई करना आसान हो जाता है। परफेक्ट। तो लास्ट वीक हमने 7 स्टेप सेल्स प्रोसेस के बारे में तो डिस्कस किया ही था। What is this basically? So these are the 7 steps to close a deal. Sales process के 7 steps होते हैं। Number 1 is prospecting, initial building, initial contact with your leads, qualifying your leads, sharing them the presentation or your video sales letter or your video presentation or your webinar, whatever you call it. उसके बाद में handling the objections, then closing them, and if the deal is closed, good to go. If the deal is not closed, then follow up with them. तो ये 7 steps होते हैं जो normally हम एक sales process में follow कर रहे होते हैं। Not sure for what reason ये document में कुछ तो issue हो रहा है, लग कर रहा है थोड़ा सा। लेट इट बी, कोई नहीं। तो 7 स्टेप सेल्स प्रोसेस हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, जिसमें से बहुत सारी चीजें हमने अपने डिस्कवरी कॉलिंग वाले पार्ट में ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं। क्या क्या चीजें कवर अप कर ली हैं? देखो, प्रोस्पेक्टिंग इज समथिंग जो आप डिस्कवरी कॉलिंग के टाइम पे जो आपने स्क्रिप्ट फॉलो करी है, अगर तो उस स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है, इनिशियल कॉन्टैक्ट आप बिल्ड कर लेते हो, रैपो बिल्ड कर लेते हो, लीड का क्वालिफिकेशन कर लेते हो, अपनी प्रेजेंटेशन उनके साथ में शेयर कर देते हो। उसके बाद में वीडियो प्रेजेंटेशन देखने के बाद में यू विल गेट ऑन अ सेल्स कॉल, जहां पर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे, क्लोजिंग करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद में फॉलो भी करना पड़ सकता है। नाउ in today's session we are majorly going to discuss about objection handling frameworks, कैसे ऐसे frameworks, like the frameworks which can help you in handling objections in a better manner, because majorly like as per the chat section also right now I can see major things like the biggest reason because of which you are not able to close sales is objections. So today we are going to discuss almost 4 5 objection handling frameworks, 4 to be exact objection handling frameworks, and let's start with the frameworks. Perfect. So सबसे पहला framework, LAER framework, whatever you call it, you want to call it LAER, LAER framework, or whatever it is, doesn't matter, but focus on the framework. Now, stands for listen, A stands for acknowledge, E stands for explore, and R stands for respond. Listen, acknowledge, explore, and respond. Follow this exact same sequence. Listen to your leads, acknowledge their problems, their questions, their fears, their desires, explore potential solutions, and then respond to them with a possible, the best possible perfect answer. Perfect. For example, let's say if we talk about the listen step, now you give the prospect your full attention and let them explain their objections thoroughly. Avoid interrupting, let them finish their thought. Now, while you're on a sales call with your leads, you might face this problem, this objection, that any kind of objection where a lead is telling you about their objection and you are so much focused on your sales only कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा निकालना है. Instead of it, focus on
गिविंग फुल अटेंशन टू योर लीड्स एंड उनकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सुनो, लिसन टू योर टू देयर ऑब्जेक्शन वेरी थॉरली, एंड बीच में इंटरप्ट नहीं करना, लेट देम फिनिश देयर थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो यू नीड टू बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू हैंडल ऑब्जेक्शंस इन अ प्रॉपर मैनर. And after that, once you listen to their complete objection, listen to their complete problem, now acknowledge their problem or acknowledge that objection, validate their concerns without immediately jumping into a counter argument. Show empathy. I understand why that might be concerning. You might start your statements like this: I understand why that might be concerning, because that person might be telling you some problem, might be telling you about some financial issue, might be telling you about some family problem, some personal problem, or anything like that. You don't need to directly jump into any counter argument or directly jump on into any solution or something like that, because if you directly start giving solution, then the other party or the lead might feel like that you are not serious about their problem, and you are actually not listening to their problem seriously. So instead of it, first of all, acknowledge their problem. You can start with the statement like, understand why that might be concerning, and once you acknowledge their problem or their concern, after that start exploring potential solutions. Ask follow-up questions to clarify and gain a deeper understanding of the root cause. For example, can you share more about what specifically worries you about the budget? For example, if they say that I don't have the budget right now, first of all, let's say if this is the objection, first of all, acknowledge that objection. All right, I understand why that might be concerning, and I totally agree with you that arranging funds immediately might be a point of concern for you, but could you share more about what specifically worries you about the budget, or what specifically worries you about arranging the funds or something like that? So understand the sequence. First of all, you listen to their objections or their concerns very carefully, then you acknowledge them, then you explore them more, ask follow-up questions or explore their problems more, so that you can actually get to the grassroots level and understand their real problem. And after that, you need to respond, provide a relevant solution or insight that addresses the objection, highlight benefits, success stories, or ways to mitigate their concern. End with a question to confirm you have resolved their concern or if anything remains unaddressed. Now, while responding, you can provide relevant solution, obviously, and after that, you can give insights that addresses the objection. For example, if that person is concerned about, I don't have the money, now you can provide relevant solutions to that. You can give them suggestions on how they can arrange money, what they can do to arrange the money, what are the available payment plans, or what are the other options that they can take help from to arrange these funds or things like that. And after that, you can also highlight the benefits of the product so that they are more confident about if they take any loan or if they take help from someone, how is it going to be beneficial for them. Tell them more about success stories and things like that. So this is how you follow this framework. You listen to their objections, their concerns, you acknowledge their objections and concerns, you explore them by asking them follow-up questions, and after that you respond with a proper solution, relevant solution, and address their objection. Now, if we talk about an example, for example, your lead says, I don't have time to implement this right now. Perfect. This is an objection. I don't have time to implement this right now. Now, the very first step that you have to follow is listen. Let them talk about their busy schedule. Let them talk about ki I don't have time to implement all of these things right now. I have my office. I go to office at 9 a.m. Then I return back at 7 p.m. After that, I have to spend time with my family also. Plus, my boss also gives me a lot of extra work. So sometimes I have to go office even more early and I don't have time. I spend 3-4 hours traveling and all that. People keep on telling their objections and concerns like that. Keep listening. Let them talk about their busy schedule. And after that, acknowledge. Now, I understand. For example, let's say if I'm talking to Hital, then I might say like, Hital, I really understand that your schedule is really packed. After that, the next step is like, I acknowledge the problem. ठीक है, समझ में आया? पहला step सुना सारी चीजों को, उसके बाद में acknowledge किया. Now the third step is to explore. How do I explore? Asking them follow-up questions. Now, what projects are most time-consuming for you, or what is your daily schedule? Are there any ways we can streamline the things, or are there any ways to get some time out of your busy schedule? Can you tell me more about your daily schedule? How does your day look like? Now they will tell you the things in detail. For example, they might tell, okay, I leave from my home at around 9 a.m. Then I travel in the metro for almost 2 hours and I reach my office at 11 a.m. And after that, blah, 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 blah. Different things वो बताएंगे. After that, you need to respond with some potential solutions. So how your product saves them time or offer, show how your product saves them time or offer onboarding support, something like that. Now, this is just an example but let's say if you're selling a product of BizGurukul or IDP or something like that, you can tell them,
कि it's okay that you spend like your day really looks packed, but you know what, we can really streamline these things and still figure out some extra time that you can dig out of this busy schedule and invest that into these things and create an extra source of income. For example, while you're traveling in the metro for 2 hours one way, that means at least you're spending around 3 hours per day in metro traveling to your office space. So in that meantime, you can spend time like creating stories or doing follow with your leads or taking sales call or maybe just watching courses and trainings and things like that. So in that way, you can utilize the schedule, and after that, whenever you find time, you can spend that time to do sales and you can create an extra source of income out of it. सो बेसिकली समझ में आ रहा करना क्या है आपने, उन्होंने कुछ भी ऑब्जेक्शन आपके सामने रखा, सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन को सुनोगे, फिर उसको एक्नॉलेज करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करने के लिए विल आस्क देम पोटेंशियल फॉलो अप क्वेश्चंस एंड एट लास्ट आप रिस्पॉन्ड करोगे जो भी उसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो गुड पार्ट इज मेजरली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स लिमिटेड है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, अभी नहीं करना है, थिंग्स लाइक दैट। ऐसी 5-7 चीजें हैं जो मेजरली ऑब्जेक्शंस आते हैं और इन सबके क्या सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता यू ऑलरेडी हैव द ट्रेनिंग्स फॉर दैट, आप उनको चेकआउट करोगे तो विल गेट द सॉल्यूशंस। एट लास्ट रिस्पॉन्ड करते टाइम आपको वही सॉल्यूशंस उनके सामने प्रेजेंट करने। गॉट इट? परफेक्ट। LAER फ्रेमवर्क किस किस को समझ में आ गया? ड्रॉप अ क्विक यस इन द चैट सेक्शन इफ यू अंडरस्टूड द LAER फ्रेमवर्क, then we will move on to the next framework. Sorted? Perfect. Feel, felt, found. Framework number 2. Now, if you are already a part of our programs and if you have checked out the objection handling wala part, तो ये feel, felt, found framework तो आपने बहुत seriously सुना ही होगा, because I have already covered this thing very much in detail and RLSA bootcamp में भी हम briefly इसके बारे में बात करते हैं, courses के अंदर in detail बात करी हुई है. So this feel, felt, found framework, the classic framework emphasizes empathy and relatability. Why I personally love this framework a lot? Because it is more about handling objections with the help of psychology, emotions, relatability, empathy, and feelings like that. Now, what does this framework mean? Feel, felt, found. Feel. Feel basically means I understand how you feel. Now, whenever you are talking to your lead, you need to make them feel like that you exactly understand how they are feeling. उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो कंसर्न चल रही है, you can also feel that वो क्या है. After that, felt. Others have felt the same way. You need to make them believe कि they are not the only one जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है. There are other people also, or maybe you also, अगर आपकी स्टोरी रिलेटेबल है उनके साथ में, तो कि you have also felt the same problem, or there are other people in this world also who have faced the same problem and at last found. But what they found was, and what they found was is going to be a solution, a testimonial, or insight that reframes their worry into a positive outcome. दिस इज हाउ यू डील विद दिस थिंग्स. सिंपल है, आप अगर पढ़ोगे डॉक्यूमेंट आपके पास में आ भी जाएगा, यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट सो दैट यू कैन रेफर टू दिस लेटर ऑन आल्सो, एंड दैट इज व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट इन अ मैनर जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द framework, then I have given you some examples also so that you can practically understand all these things. And what I'm doing is basically just explaining you the document. Perfect. So feel, I understand how you feel. Felt, others have also felt the same way. And when you tell about found, you need to give them a solution, testimonial, or an insight that reframes their worry into a positive outcome. Now let's understand this thing with an objection. For example, a lead gives you an objection that I am not sure if I can afford this. सबके सामने ऑब्जेक्शन जरूर आता है, सेम लाइक आई डोंट हैव मनी, अभी पैसा नहीं है, बाद में अरेंज करके कर सकते हैं क्या, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी पैसा नहीं, थिंग्स लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन अफोर्ड दिस. नाउ understand these 3 different parts. First of all, feel. I completely understand how you feel. Money is tight for a lot of people right now. Perfect. You make them believe that you also feel their problem. It is not just them who is facing a financial problem or budget problem or something like that. There are other people also who have a tight budget. After that, felt. Many of our clients initially felt the same way. There are other clients also who felt the same way. Their budget was also tight, but found. The last step is found. But they found that the return on investment was quick. In fact, one client recouped the cost within 2 months from the added revenue they generated. Let's explore how that might work for you.
यू नीड टू एक्सप्लेन देम कि उनकी जो दिमाग में प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे रिफ्रेम करके वही उनका सॉल्यूशन बन सकता है या फिर उसका क्या सॉल्यूशन दिया जा सकता है. अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. बट इफ यू डायरेक्टली गिव द सॉल्यूशन, लाइक यू माइट हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हाई दिव्यांश, व्हाई डोंट वी गिव डायरेक्टली गिव द सॉल्यूशन. इफ यू डायरेक्टली गिव द सॉल्यूशन देन देयर इमोशनल माइंड वोंट बी एक्टिवेटेड. कोई रिलेटेबिलिटी बिल्ड नहीं होगी, कोई सिंपैथी, एम्पैथी, कोई फीलिंग बिल्ड नहीं होगी. एंड यू वुड बी डायरेक्टली गिविंग देम अ लॉजिकल आंसर. एंड पीपल डोंट बाय थिंग्स लॉजिकली, they buy things emotionally and justify them logically. So what you are doing is you are giving them emotional reasons to buy the things in the first two part, that is the feel and the felt wala part. And in the last part, found wala part, you are giving them logical reasons to justify their emotions. Understood? Emotional reasons in the first two parts so that you can make them buy, and logical reason in the third part so that they can justify why they bought this thing. Got it? And this applies everywhere. Whatever product you are selling, it is not just for these kind of products, but whatever you are selling, this applies the same. And people use these frameworks on you. Like अगर आप एक्सप्लोर करके देखो, अगली बार से कुछ भी खरीदने जाना, टीवी, मोबाइल फोन, गाड़ी, घर, कुछ भी, you will find that people are intentionally or unintentionally using these frameworks on you. Got it? किस किस को दूसरा फ्रेमवर्क समझ में आ गया? फील, फेल्ट, फाउंड, ड्रॉप अ क्विक यस in the chat section. And everyone, please be interactive. Please be quick and active in the chat section if you want to stay in the session and if you want to learn more frameworks. Perfect. All right, sorted. Now let's talk about the third framework, that is ACAC framework. Acknowledge, clarify, address, and confirm. Acknowledge, clarify, address, and confirm. What does acknowledge mean? Recognize their concern and let them know you hear it. Again, it is same like this thing, listen and acknowledge in the first framework, that is LAER framework. We are again like using a different kind of a framework. We are rephrasing the things and the parts of the framework to create a new framework so that आप दूसरे तरीकों से भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सको. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जरूरी नहीं हर ऑब्जेक्ट, हर फ्रेमवर्क हर जगह पर एग्जैक्टली वैसा का वैसा लग जाएगा. यू माइट नीड टू ट्विस्ट देम एंड दैट इज व्हाई ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स बनते हैं. एसी फ्रेमवर्क, एक्नॉलेज, recognize their concern and let them know you hear it. And the second step, clarify. Ask questions to isolate the real issue. Often the first stated objection isn't the true core concern. And like इट इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम की पहली बार में कभी भी ट्रू कंसर्न सामने आता ही नहीं, रियल ऑब्जेक्शन सामने आता ही नहीं. व्हेन यू आस्क देम फॉलो अप क्वेश्चंस, देन यू गेट टू नो अबाउट द रियल ऑब्जेक्शन और द रियल कंसर्न दैट दे हैव इन देयर माइंड. तीसरा स्टेप, एड्रेस. प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन और रीअश्योरेंस दैट टैकल्स देयर रियल प्रॉब्लम. एंड लास्ट and the fourth step, confirm. Check in to see if your response resolves their objection or if there's still a barrier. Got it? Acknowledge, clarify, address, and confirm. So in the first step, you acknowledge their problem, clarify. In the second step, you clarify by asking them follow-up questions, address. In the third step, you give them the solution. And in the fourth step, you cross-check whether they have got the solution or not, or if they have any other objectional barrier in their mind. For example, let's understand this thing with the help of an example. Let's say a lead gives you this objection that I don't have the money to invest right now. Now, how do you acknowledge this thing? I understand where you're coming from. It can feel risky to invest when your budget is tight. It's completely normal to be concerned about cash flow before making any financial commitment. Show empathy and let them know their concern is valid. Position yourself as understanding, not dismissing their current financial constraints. Understand this thing. This is something which I've been telling for a very long time, that whenever you are handling objections, it is never a me versus you game. It is never about like you and your lead are on the opposite side. It is always about you and your lead are on the same side. You need to make them feel that you and your lead are on the same side and you have a common goal. And that common goal is to solve that lead's problem. Perfect. So that is the same thing that we are doing here. By acknowledging their problem, we are making them feel that their concern is valid and we are showing empathy towards their concern and towards their life. Got it? So that is why you need to acknowledge this problem. After that, clarify. Can you share a bit more about your main concern? Is it about the initial payment or is it uncertainty about whether you will see a return on your investment or not? You need to ask them follow-up questions to clarify exactly what is the real problem. Got it? Ask a follow-up question to uncover the real reason behind their financial hesitation. Maybe they literally don't have the funds, or they might doubt the program's ROI or the return on investment. Perfect. After that, address. Give them the solution.
Based on what you have said, it sounds like the biggest worry is paying upfront and not being sure you will recoup the cost. One thing many of our clients appreciate is that our program focuses on real, actionable strategies to generate revenues quickly. We also break down payments to make it easier to manage. On average, clients who apply these methods see returns that not only cover their initial investment, but help them grow their income beyond that. Perfect. You give them a solution. Provide a direct response to the root cause, lack of immediate funds or ROI worries, whatever it is, whatever the concern is, give them a direct response to that root cause. Offer a partial payment plan or financial. If it is about the financial inquiry, then in that case, आप उनको कोई payment plan दे सकते हो. If it is allowed from your company or something like that, and whatever of या फिर जो भी concern है, बस उस चीज का solution दो, उस चीज को address करो. And after that, the last step is to confirm. Does that ease your concerns about investing right now? Is there anything else on your mind that might still be holding you back? Check in to see if your explanation or solution addresses their worry. You need to cross check this thing that क्या उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल चुका है या फिर कोई और चीज है जो अभी भी उनके दिमाग के अंदर चल रही है. और अगर कोई और चीज है तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है. बिकॉज इफ यू डोंट एड्रेस ऑल द ऑब्जेक्शंस देन यू माइट लूज द डील. परफेक्ट. तो कंफर्म करना दोबारा जरूरी है कि सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर मिल गए या फिर कोई और चीज है जो उनके दिमाग में चल रही है. एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन डायरेक्टली आस्क बाय figure out by asking a question. Does that for example, does that ease your concerns about investing right now? Is there anything else on your mind that might still be holding you back? Is there anything else on your mind that might still be holding you back? Do it like that. Perfect. All right. किस किस को तीसरा फ्रेमवर्क ACAC फ्रेमवर्क समझ में आएगा? ड्रॉप अ क्विक यस इन द चैट सेक्शन. Drop a quick yes in the chat section so that we can move on to the fourth and the final framework for today. Uske baad mein there are a few more things we will discuss. We will have a Q&A session. And yeah, 3F model: fact, feeling, and future. A simple variation that focuses on exploring the facts, how the clients feel, and the vision for the future solution. Now, in this particular framework, the first step is to figure out the facts. Understand the objective details behind the objection, budget numbers, time constraints, or whatever it is. Ask clarifying questions to gather specifics. For example, if they're telling about I don't have time, then figure out why they actually don't have time. उनका टाइम जा कहां पर रहा है? क्या उनके पास में जेन्युइनली कुछ भी टाइम नहीं बच रहा है, या फिर कहां से टाइम निकाला जा सकता है, या फिर वो जस्ट उनके माइंड में एक चीज है कि उनके पास में टाइम नहीं बच रहा. Whatever it is, ask clarifying questions to gather specific numbers, specific data, so that you can get some facts. एंड फैक्ट्स वेग नहीं होते हैं, फैक्ट्स क्लियर होते हैं कि दिन में टाइम नहीं बच रहा है, या फिर दिन में इतने घंटे का टाइम बच रहा है, या फिर यहां से टाइम निकाला जा सकता है. आफ्टर दैट, फीलिंग्स. एक्नॉलेज इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, स्ट्रेस अबाउट मनी, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर इट इज. उनके इमोशनल या फिर अगर कोई भी साइकोलॉजिकल बैरियर है, उनको एक्नॉलेज करो. सॉल्यूशन नहीं देना, सिर्फ एक्नॉलेज करो. परफेक्ट. एंड आफ्टर दैट टेल देम अबाउट द फ्यूचर, कि अगर इन सारी चीजों का सॉल्यूशन उनको मिल गया तो फ्यूचर कैसा होने वाला है उनके लिए. ऑफर अ फॉरवर्ड लुकिंग सॉल्यूशन. Paint a picture of how using your product/service will improve their situation or alleviate their concerns. Perfect. For example, अगर उन्होंने बोला आई एम नॉट कन्विंस दैट दिस विल सॉल्व माई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म, मुझे नहीं लगता कि इस चीज से मेरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स. कुड यू डिस्क्राइब योर मेन पेन पॉइंट्स? हाउ ऑफन डू दे ऑकर? मतलब रियल रीजन क्या, आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिलेगा? क्या आपको लगता है कि आपको यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा? आस्क देम सम फॉलो अप क्वेश्चंस सो दैट यू कैन फिगर आउट द फैक्ट्स. After that, feelings. It sounds like you have been dealing with this for a while and you feel cautious about investing in another solution, right? ओके. लाइक यहाँ पर थोड़ी फीलिंग्स के बारे में बात करनी है, थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है, थोड़ा आप डिटेल में भी जा सकते हो कि आई ट्रूली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड यू नो व्हाट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि जिस सिचुएशन में आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से डर लगेगा ही लगेगा. हर किसी को डर लगेगा. मैं आपकी जगह पर होता तो मुझे भी डर लगता, बिकॉज आप पहले भी इन्वेस्ट कर चुके हो एंड वहां पर आपको लॉस हुआ है. तो यू माइट ऑब्वियसली फील कॉशियस अबाउट इन्वेस्टिंग इन अनदर सॉल्यूशन. And then tell them about the future. Now, here's what we can do to ensure long-term success. Our team provides ongoing support, regular updates, and 30-day money back guarantee, blah, blah, blah. अभी तो एग्जाम्पल से रिलेटेड है, बट अगर आप इसको अपने प्रोडक्ट के साथ में लेके जाना चाहते हो तो यू माइट से लाइक कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ लीड इज टेलिंग मी आई एम नॉट कन्विंस्ड ये इससे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पास में अभी तो पैसा नहीं है एंड मैं पहले भी पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, थिंग्स लाइक दैट. तो आप डिटेल में पहले तो उनसे पूछोगे कि ओके आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एंड यू डोंट फील लाइक दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, बट कैन यू टेल मी मोर अबाउट कि मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस चीज से आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता है? इज इट बिकॉज ऑफ सम पास्ट ऑकरेंसेस या कोई और ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप
आपको यहाँ से लॉन्ग टर्म हेल्प नहीं मिल सकती, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, देन दे विल टेल यू अबाउट कि यस आई हैड इन्वेस्टेड इन दीज मेनी थिंग्स एंड वहां पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, आई लॉस्ट माई मनी एंड थिंग्स लाइक दैट. नाउ यू नीड टू गेट इनटू द फीलिंग्स वाला पार्ट. नाउ यू नो व्हाट, आई एब्सोल्युटली फील योर प्रॉब्लम एंड आई नो कि ऐसा होना is absolutely okay, because if I would have been at your place, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार I have already invested a lot of money, I haven't got any solution, तो मुझे इस बार भी solution मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज की क्या गारंटी है. And that is absolutely fine, you don't know me, like I am completely new to you, opportunity आपके लिए नहीं, तो doubt हो सकता है. But you know what, I can assure you that you are going to get long term success from here, because our team provides you with वीकली लाइव ट्रेनिंग्स. आपको 3 से 4 बार हफ्ते में लाइव ट्रेनिंग्स मिलने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मंडे टू संडे 7 days a week you will get phone call support from us, plus you will get live mentorship calls from me also, plus you have me on your WhatsApp. Anytime you need my support, you can just drop me a text and I would be available to you also. So in that case, अगर आपके पास में इतनी सारी चीजें, आपके पास में लाइव ट्रेनिंग्स है, फोन कॉल सपोर्ट है, व्हाट्सएप पर मैं आपके साथ में हूँ, एंड हमारी लाइव ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, आफ्टर दैट डू यू फील कि आप उसके बाद में भी चीजें नहीं कर पाओगे, रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे, थिंग्स लाइक दैट. तो इस तरीके से आप उनको फ्यूचर दिखाने वाले हो, एंड दैट इज हाउ यू एंड द पिच. फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड फ्यूचर. तुम्हारे पास में 3F, 2 फ्रेमवर्क हो गए, एक तो फील, फेल्ट, फाउंड, और दूसरा फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड फ्यूचर. सो अगर आप इन चारों फ्रेमवर्क्स को देखोगे, यू माइट गेट सम सिमिलैरिटीज इन ऑल ऑफ दीज फ्रेमवर्क. वाई? बिकॉज ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स ना सेम फंडामेंटल्स के ऊपर ही बिल्ड होते हैं. जो फंडामेंटल्स मैंने डिटेल में आपको ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाए थे, दैट इट इज नेवर अ मी वर्सेस यू गेम. इट इज ऑलवेज अबाउट दैट यू बोथ आर ऑन द सेम साइड एंड यू हैव अ कॉमन गोल, एंड हाउ यू फिगर आउट द करेंट सिचुएशन एंड द डिजायर्ड सिचुएशन ऑफ योर लीड. उन सारी चीजों के ऊपर ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स बेस्ड हैं. इट इज जस्ट दैट एक चीज को ट्वीक करके दूसरी चीज बनाई गई है. उन्हीं सारे फंडामेंटल्स को ट्वीक करके सारे के सारे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं. हर किसी में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं. इन सारी चीजों को समझना इसलिए जरूरी है, सो दैट व्हेनेवर यू फेस अ सिचुएशन, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उस चीज का सॉल्यूशन निकल के आ जाए. इट वोंट बी लाइक कि यू विल लिसन टू एन ऑब्जेक्शन एंड देन थिंक अबाउट कि मैं यहाँ पर 3F मॉडल लगाऊं या फिर ACAC फ्रेमवर्क लगाऊं या LAER लगाऊं या क्या लगाऊं. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. इट इज लाइक कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उस चीज का सॉल्यूशन आना चाहिए. एंड हाउ विल दैट कम? First step is to study all of these frameworks thoroughly, and after that practice them as much as possible, so that ये चीजें अंदर से आनी चाहिए. It must not be like you are artificially deciding कि I'm going to use this framework to handle this objection. It must come like automatically. Got it? So now whenever you are handling objections, always remember this thing, that you need to stay calm and positive. Never treat objections as personal attacks. काफी सारे लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि whenever a lead tells them an objection कि I don't have money, I don't want to invest in this thing, you are a scammer or anything like that, they take it personally. Now understand this thing, वो lead आपको जानती भी नहीं है, तो they really don't care about you. They are not telling you anything, but they are telling that opportunity. So if they are saying positive or negative, whatever they are telling, it is about that opportunity or the product that you are representing. So किसी भी चीज को personally नहीं लेना है. Always stay calm and positive, तभी आप objections handle कर पाओगे. Because if you're not calm, if you're overreacting, if you're getting anxious, then in that case आप ये frameworks use ही नहीं कर पाओगे. आपकी tonality बिगड़ जाएगी, आप गलत तरीके से बात कर लोगे, and you would lose that. Perfect. So always remember, whenever you are handling objections, always stay calm and positive and listen actively. And this is something which you must have observed in all of the steps also, all of the frameworks also, कि बहुत सारे frameworks में you will find this step that you need to listen to your leads very actively. You need to listen them, you need to acknowledge their problems, because sometimes prospects just want to feel heard. Like लोग बस ये चाहते हैं कि कोई उनको सुने, कोई उनकी प्रॉब्लम्स को सुने. एंड अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सुन के, फ्रेमवर्क्स को आगे फॉलो करके अगर उनको सॉल्यूशन भी दे रहे हो, दे वुड बी मोर देन हैप्पी. बिकॉज हर किसी को बस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए. नो वन हैज गॉट पर्सनल ग्रजेस विद यू. आपकी लीड्स आपको जानती भी नहीं, सो दे आर नेवर डूइंग एनी पर्सनल अटैक्स ऑन यू. सो स्टे काम एंड पॉजिटिव एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एक्टिवली. बी कंसाइज, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग, प्रोवाइड अ क्लियर एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स. जो भी आपका सॉल्यूशन हो उसको क्लियर शब्दों में दो और डायरेक्ट रिस्पॉन्स दो. डोंट मेक इट टू लार्ज. मतलब जबरदस्ती की कहानियां मत सुनाओ, सो दैट लाइक आपकी सेल्स कॉल फालतू में 5 मिनट की हो सकती थी एंड आपने उसको 25 मिनट्स का कर दिया. डोंट डू इट लाइक दैट. बी कंसाइज विद योर सॉल्यूशंस एंड बी एज क्रिस्प एज पॉसिबल. कम से कम शब्दों में सॉल्यूशन देने का ट्राई करो. यूज स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स. दिस इज समथिंग आई हैव बीन टेलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट शो डोंट टेल. Show them the things. Testimonials दिखाओ, stories बताओ, real life examples देने का start try करो, so that you can add credibility to your offer and credibility to your pitch. Perfect.
invite collaboration, end with a question like, does that answer address your concern, or what do you think about this approach, to keep them engaged. हर बार उनको कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाने का ट्राई करो. यू माइट सी कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर यू गिव देम द आंसर ऑफ देयर ऑब्जेक्शन एंड आफ्टर दैट दे आर साइलेंट, या फिर वो एक्टिवली कॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. तो आस्क देम क्वेश्चन कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, डज दैट एड्रेस योर कंसर्न, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अप्रोच, क्या आपको लगता है कि इस चीज से आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्या आपको लगता है कि इस चीज से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आस्क देम क्वेश्चंस एक्टिवली सो दैट उनका एंगेजमेंट बढ़ता रहे. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर उनका एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, अगर वो एक्टिवली कॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे. और अगर इंटरेस्ट लूज कर दिया तो इट इज गोइंग टू मेक नो सेंस, राइट. आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला. एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव अगेन टोल्ड, नो मैटर व्हिच फ्रेमवर्क यू यूज, एलएआर यूज करो, फील फैंड फाउंड यूज करो, एसीएसी यूज करो, 3F यूज करो, या बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ भी यूज करो, कुछ काम नहीं करने वाला. यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, अगर हम सब चीजों को समराइज करें, वैलिडेट द कंसर्न, उनकी बातें सुनो, ट्रस्ट जीतने का ट्राई करो, एम्पैथी रखो उनके लिए, dig deeper to find the real issue, ask them follow up questions, clarifying questions, so that you get to know about the real grassroots problem. After that, offer targeted solutions in precise manner, and you can ask for reassurance also, so that you get to know कि सारे objections का answer मिल चुका है, and check back to ensure you have fully resolved their concern. That is what I have said right now. Got it? So this is what is about objection handling. परफेक्ट. तो शायद आज कुछ लोगों को कुछ नए फ्रेमवर्क भी मिले होंगे जो अभी तक पहले नहीं सुने होंगे, पहले अप्लाई नहीं किए होंगे. सो यू कैन लुक बैक एट दिस ट्रेनिंग, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. आई एम ड्रॉपिंग द लिंक फॉर आवर कम्युनिटी इन द चैट सेक्शन, सो दैट आप इसको डायरेक्टली यूज कर सको. लेट मी जस्ट ड्रॉप इट इफ यू वांट टू रेफर टू इट. ऑलराइट, सो आई हैव ड्रॉप्ड द लिंक इन द चैट सेक्शन फॉर द कम्युनिटी. आप इसको चेकआउट कर सकते हो. एंड नाउ if you have got any questions related to objection handling and things like this, let me know in the chat section. I would be taking a few questions, and that is how we are going to end this session today. Objection Q&A के बाद में we would end the session. डिसाइड कैसे करें कि कब कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपको डिसाइड नहीं करना है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, बिकॉज फ्रेमवर्क्स अलग अलग है ही नहीं, दे आर ऑल सेम. इट इज जस्ट दैट एक फ्रेमवर्क को ट्वीक करके दूसरा फ्रेमवर्क बनाया गया है. एंड ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स कहाँ से निकले? इट इज फ्रॉम दोस फंडामेंटल्स ओनली, जो आपको ऑलरेडी मैंने कोर्सेज के अंदर इन डिटेल सिखाए हुए हैं. सो देखो, इफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट कि इसमें से क्या यूज करना है, कैसे करना है एंड क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक आउट ऑल द ट्रेनिंग्स जहां पर इन डिटेल हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फंडामेंटल्स को समझा हुआ है पहले. लाइक घंटों का कंटेंट है, फ्रेमवर्क के ऊपर बात भी नहीं करी है. एंड इट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. पहले उन चीजों को सीखो, उसके बाद में इन फ्रेमवर्क्स को सीखो. देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कि ये फ्रेमवर्क्स बने कैसे. एंड आफ्टर दैट जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम. दो चार बार डॉक्यूमेंट को पढ़ो, सेल्स कॉल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इट विद योर बिजनेस कोचेस. एंड आफ्टर दैट, like once you have practiced it enough, you will find that कि these things are coming to you intrinsically. मतलब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूं या वो फ्रेमवर्क यूज करूं. It will automatically come out. So that is how your journey is going to be. Don't get overwhelmed right now looking at all of these things. So we have a question from Sri Nandini. Sri Nandini, I have given you the access. You can unmute. Hi, sir. Am I Hello. audible? Yeah, you are audible. All right, great. Thank you so much. So, I have been doing some approach, and then based on that, I'm asking the person no to start with the advance payment. Okay, so people are ready to do it, and now, how can I approach further? So, let's say, for example, today I have spoken with some person, and then they are okay to pay the advance payment, and then they will be paying in another 7 to 10 days. All right. So, in order for me to keep them engaged for the rest of the 7 to 10 days, can I create a broadcast for them, and then can I send the testimonials on everyday basis? Will that work?
I won't suggest ki you do automated broadcast follow-ups or things like that in this case, because Hello? if the number of leads is not like very big, then in that case, try to connect with them Sir, I'm personally. sorry. I'm telling that if the number of the leads is not so high, like the leads are not too much, jo advance payments wale, then in that case, try to connect with them So personally. your voice is Don't send really them. breaking. I hope everything is fine from mine. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Let me know in the chat section if my voice is audible to everyone else. Srinandani, I feel this is something from your end because everyone else is like telling me my voice is absolutely clear. So Hello? I'm just telling you Hello? the solution. You can check out the recording later on also. You will get the recording and you will get the answer of this question also. So what I'm telling is if if the number of the lead is very high, let's say you have got 500 leads who have paid you the advance amount and it is not possible to connect with them one-on-one, then in that case you might use a broadcast or something like that to send them testimonies, but don't do it too much, like sending 2 3 testimonies in a day, or maybe one testimony per day is also going to be a lot, because that would just irritate them because they now have trust, they have already paid the booking amount, and doing a lot of follow with them would also be irritating. So don't do it too much. Okay. Apart from that, if the number of leads is not so high, let's say you have got just few leads, 5 10 leads, then try to connect with them personally, build a personal connection with them. How you can build a personal connection? Maybe just start a random conversation which is not about your business. Maybe you reply to some of their story, maybe you're talking about some topic which is completely off your business, outside of your Okay. business, and that is how you Okay. build a connection with them, so that they don't feel like you're talking to them because you want to get the remaining payment. It is just that you're talking to them because you want to talk to them. Don't make it sound like you are doing follow up with them, because if they feel Okay. that you are doing follow up with them, then they might you might lose the deal. Got it. I got it. I understand. I also have one more question which is out of box, like regarding ads manager. Can I ask you? Sure. Thank you so much. So, regarding the ads, I am doing form ads. Okay, I'm running Hmm, form ads, and I hmm, have almost like 800 on the line. Okay, I'm hmm, trying to do it on the regular basis. I have also hired a freelancer. Okay, hmm, hmm. so now I still have 700 left. Okay, so sir, in this case, I just wanted to quickly confirm, since I have already 700 and I wanted to make calls for them, and it will take almost 1 week. uh, Hmm. in that case, again, doing form leads, like continuing the form thing, no, I'm quite unsure that if it definitely works or not. So I'm planning to go for Instagram via WhatsApp ads. So can I do that for now? Because Srinandani, you have got a big target, and whatever you are doing, either of these two things, they have got their own pros and own cons. Like they both have got pros and cons. Like if you are Okay. using this lead form wala thing, then in that case you are getting a lot of leads upfront on your LMS. You can directly call them and invite them in your WhatsApp, and that is going to be a great number. But if you are delaying in calling to them, like you said, you have already got 700 leads in pending and you Yeah. haven't called them yet. So if it is more than 24, 48 hours or maybe 72 hours, after that, calling them won't make sense because they won't be responding to you in a proper manner. So that is not Yeah. going to make sense. You need to do hard work and you need to call them within 24 hours. And when I say 24 hours, then that is the maximum limit. Call them before 24 hours, whatever it is. If you are getting 100 leads or 200 leads per day, whatever it is, call them on the same day. You have to figure out how you're going to manage that. So that is something, or else you are going to lose those leads. Apart from that, Okay. if you don't have time and if you're not able to manage with these things, and if you're doing that Instagram DM to WhatsApp wala thing, that will Okay. obviously make sense to save time. But in that case, you are going to lose a lot of leads. So that is basically called lead leakage. If you are getting Oh, 100 leads on your Instagram, you will only get 20 30 or max to max 40 leads on your WhatsApp. The rest of the 50 60 leads will 100% be dropped off. They will never text you on WhatsApp. So in that case, your effective cost per lead is going to be at least 3 to 4 times of the actual cost per lead that you are seeing. So let's say if your actual lead per cost per lead is 10 rupees, then your effective mhm. cost per lead is going to be 40 50 rupees. So that is not going to make sense for you. If you're getting 100 Okay. leads on your Instagram, you will only get 20 30 leads on your WhatsApp. So if you are Okay. okay with that, if you're okay to burn money on like on the front end, then in that case you can also use the Instagram to WhatsApp wala funnel. But yeah, Okay. that is like you can save time over there, but you will lose leads. You can Got get it. a lot of leads in this lead form wala thing, but you have to spend a lot of time and do hard work in this case. Okay. Okay. So depending on the pros and cons, I can take the decision, right? So I was thinking, Yep, at least if absolutely. I'm till I complete 700 leads, can I start with Instagram so that I don't, at least now I'm not losing
those leads, because in the end of March there are going to be too much of offers, and even people said within my team, they said to have ample leads. Okay, so however, I'm going to complete the 700 leads within this week, that's for sure. So the remaining things, I don't wanted to waste Mm. the time, so just wanted to check with you if that I would works or not. still suggest go with the lead form thing only, because apart from all the things, there is one more very big concern happening with the Instagram leads, is that now Instagram leads are not going to save your contact while texting you on WhatsApp, because they directly get the option to send message on WhatsApp without saving Okay. your contact. So in that case, even if, like, let's say 30 people are texting you in your WhatsApp, you will find that out of those 30, 15 to 20 people have not even saved your contact. So it is not going to make any sense for you, because you won't be able to follow up with Perfect. them. Makes sense. Okay. So that I is why got we started up with this thing. So it's better, instead of utilizing these 700 leads in the next 7 days, try to utilize them, call them all in the next 2 days, and generate more leads in the same manner. I know it is Okay. going to take a lot of hard work and efforts, but yeah, that is the only best possible way which can give you the highest return on your investments. All right. All right. I totally understand. And whatever you're saying makes sense completely, sir. Thank you so much for that. Yeah, like, thank you. Yeah. Chara. Okay, guys. Any more questions? YouTube ki janta. Koi questions? Drop them in the chat section. Which type of WhatsApp we should use, normal one or what business WhatsApp? राधिका, दिस इज समथिंग जो आपके बिजनेस कोच ने आपको वीक 1 या वीक 2 में ही बताया होगा। अगर आपने उनसे भी पूछा होता तो ऑब्वियसली ट्राई टू यूज नॉर्मल व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप के बैन होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। यूज नॉर्मल व्हाट्सएप जब तक पॉसिबल है। दैट इज वाई वी हैव डेवलप टूल्स लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट आप नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर भी ऑटोमेशन लगा सको। सो यूज नॉर्मल व्हाट्सएप। ऑलराइट गाइस, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट ड्रॉप अ क्विक डन इन द चैट सेक्शन, सो दैट मुझे एक बार कंफर्मेशन मिल जाए कि आज सारी चीजों से के सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं। सर, ऑटो रिस्पॉन्डर वर्सेस व्हाट्स ट्रैक। श्रीनंदिनी, I would personally suggest WhatsTrack. Now, it is not about ki WhatsTrack is my own tool, or I have a holding in that company or something like that. That is why I'm suggesting WhatsTrack, because WhatsTrack is something which I have personally developed, not actually personally developed, but developers को मैंने personally काम करवाया है कि इसमें क्या features या क्या चीजें चाहिए specifically for affiliate marketers. Like in the case of WhatsTrack, you need to do a lot of manual efforts in saving contacts. First of all, you cannot save contacts with WhatsApp autoresponder. You need a separate tool like InTouch or any tool like that for saving your contacts. So we have actually tried to integrate all the things in WhatsTrack only, that too uh, without a lot of manual efforts. Like, you don't need to even click a single button to save your contact. If WhatsApp is installed in your phone and you have an active subscription, WhatsApp will automatically save all of the contacts with a prefix of the date and the time, and it will automatically save all the contacts. तो आपको एक single extra button दबाने की भी जरूरत नहीं है. WhatsApp can send cold DMs? No. WhatsApp cannot send cold DMs. It is only used for automating your welcome messages and follow-up messages, and after that, saving your contacts on automation. You can surely try keyword-based messaging also, but follow-up. Srinandani, you can send delayed messages on WhatsApp if you're asking about that. Like WhatsApp autoresponder पे जैसे आप भेजते थे, you can similarly send delay messages on WhatsApp also. Delay message only once. Yes, we have given the option once only, because also ज़्यादा if you are doing more than that, then WhatsApp normally bans your account, and we have observed all of these things. That is why we have deleted some features from WhatsApp or autoresponder and added some features in WhatsApp to make it most optimized. And that is why what we have seen is, like, it's been almost 5-6 months of WhatsApp in market until now, and we haven't seen a single case of WhatsApp ban because of WhatsApp. But there were a lot of cases of WhatsApp ban because of WhatsApp autoresponder. So you can obviously send delayed messages, explore the tool. If you need help, then you can contact our team.
repeat the name of the application. What's Trek? I have typed the name in the chat section. Look for it. You will find it on the Google Play Store. You can check out the website. You can check out the Google Play Store, whatever you want. I'm dropping the Play Store link also in the chat section for everyone on YouTube as well. All right, sorted. Any more questions? If you have got any more questions, just drop it in the chat. Shri Nandini, do you have more questions or is it like आपका hand raise पहले से ही है? All right. Perfect, guys. So I feel like all the questions are done for today. I cannot see any more questions in the chat section. No raise hands, no questions on YouTube as well. So, all right, that's it for today. So we will catch up next week. YouTube Wali Janta, we will see you back on Tuesday. And everyone, DBT Elite, let's catch up on Friday in a circle call. And yeah, we'll discuss more topics, more in-depth topics. So if you have any questions, you can connect with you one-on-one and you can ask your questions as well. Perfect. See you guys next week. All the best.